मोसाद ने चलाए बैक टू बैक 3 ऑपरेशन। ईरान में मिसाइलों से मचा डाली तबाही। बदले की कार्रवाई कर ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का दिया करारा जवाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 13 जून की सुबह सुबह जिस वक्त ईरान के लोग सोए हुए थे, उस वक्त इजराइल ने एक एक कर कई मिसाइलें दाग दी और युद्ध का आगाज कर दिया। तेहरान से सामने आई तस्वीरों ने खौफनाक मंजर तो दिखाया ही, साथ ही साथ ईरान के जहन में बदले की आग को पनपा दिया। वैसे भी जो लोग ये सोच रहे हैं कि ईरान कमजोर है, वो बहुत बड़े मुगालते में है। इजराइल ईरान के बीच का युद्ध मदर ऑफ ऑल वॉर्स कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही देश बेहद मजबूत हैं और दोनों का बैक सपोर्ट भी। चारों तरफ धुआं, आग की लपटें, झन्नाटेदार आवाजें। अंधेरी रात में लगातार आसमान में बार बार जो रोशनी हो रही है, वो किसी त्योहार के उपलक्ष्य में नहीं हो रही, बल्कि ये दोनों देशों के कुछ प्रमुख शहर हैं जिनमें मिसाइलें दागी जा रही हैं। पहले ये शुरुआत इजराइल से हुई और फिर अब ईरान भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। युद्ध का आगाज तो हो चुका है, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोनों देश किस हद तक जा सकते हैं, ये अगर आपको समझना है तो दोनों की ताकत को पहचानना होगा। वो ताकत ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मोसाद ने कैसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को अंजाम तक पहुंचाया, वो समझिए। मोसाद के वो 3 ऑपरेशन जिनसे परेशान हो उठा ईरान। ऑपरेशन 1, मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले क्षेत्रों में ड्रोन को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजराइल का व्यापक अभियान शुरू हुआ। ऑपरेशन 2, इन प्रणालियों को इजरायली वायु सेना के हमलों के साथ तालमेल में सक्रिय किया गया। उन्होंने असाधारण सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइलें लॉन्च की। ऑपरेशन 3, ऑपरेशन के दूसरे चरण में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे उन्नत हमलावर सिस्टम तैनात किए। इन इकाइयों ने सफलतापूर्वक ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली विमानों के लिए रास्ता खुल गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ करने के लिए पहले से स्थापित नेटवर्क का फायदा उठाया। कैसे 3 चरणों में इस ऑपरेशन को मोसाद ने अंजाम दिया, ये तो आपने देखा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब ये भी समझ लीजिए कौन कितना ताकतवर है। दोनों देशों में कौन है कितना ताकतवर। जमीन पर हुई लड़ाई तो कौन आगे। इजराइल के पास कुल 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं, जिसमें 4,65,000 रिजर्व सैनिक और 35,000 अर्धसैनिक बल हैं। ईरान की सेना में 6,10,000 सक्रिय सैनिक, 3.5 लाख रिजर्व सैनिक और 2,20,000 अर्धसैनिक बल हैं। इजराइल के पास 1,370 टैंक, 43,407 बख्तरबंद वाहन, 650 ऑटोमेटिक तोपखाने यूनिट्स, 150 रॉकेट आर्टिलरी शामिल हैं। ईरान के पास 1996 टैंक और 65,765 बख्तरबंद वाहन है। हवाई हमला हुआ तो कौन ज्यादा ताकतवर। इजराइल के पास 612 विमान है, जिसमें 241 लड़ाकू जेट, 146 हेलीकॉप्टर, 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास कुल 551 विमान हैं, जिनमें 186 लड़ाकू जेट, 129 हेलीकॉप्टर और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। समुद्र में किसके पास ज्यादा ताकत। नौसेना की बात करें तो इजराइल के पास 5 सबमरीन, 7 कोरवेट और 45 गश्ती जहाज हैं। ईरान के पास 7 फ्रिगेट, 3 सबमरीन, 19 गश्ती जहाज है। बहरहाल जिस तरह से मोसाद ने 3 ऑपरेशन चलाकर ईरान पर हमला किया, अब जवाबी कार्रवाई भी लगातार जारी है। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। और हाँ, जाते जाते सुनिए इस हमले के बाद नेतन्याहू, जो कि इजराइल के पीएम हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before. Steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister,
I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you,
Believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you.